Hello everyone, welcome to the E-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is our lecture number 3rd in which we will study the differential equation of linear simple harmonic motion and its solution. In the previous lecture, the lecture number 2nd, we studied the linear simple harmonic motion and the angular simple harmonic motion. So we know that the linear simple harmonic motion, the particle oscillation is what? The particle performing a to and fro motion along its mean position. For example, spring mass. This is our spring having the one end of the spring is attached to the rigid support and the another end of the spring is attached to the mass m. Okay. Now we pull this mass with the string. So what happened? Here, and then release, then we perform a simple harmonic motion, linear simple harmonic motion. So, in the linear simple harmonic motion, the force is directed toward the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position. इसका मतलब क्या हुआ कि linear simple harmonic motion में force क्या रहता है? Force is directly toward the mean position. मतलब जितना इस spring के साथ में इस मास को जितना इधर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जितना डिस्प्लेस करेंगे, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर में स्टोर होगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. ओके, और एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. ओके, तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या है कि ऐसा फोर्स कि जो उस मास को फिर से उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, लाके रखता है, उसको बोलेंगे हम रिस्टोरिंग फोर्स. So here we have to find out the differential equation of this linear simple harmonic motion. Okay, so for that we consider here this spring mass having mass as m. We pull this, we display this with x, so the restoring force stored in this spring. So this restoring force F equals to minus kx is considered as equation number 1. So here this is the restoring force which is stored in the spring, जो कि उसको मास को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाके रखेगा. सो दिस F इज इक्वल टू माइनस kx. हियर k इज द फोर्स कांस्टेंट एंड नेगेटिव साइड इंडिकेट दैट द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके, दिस कंसीडर एज इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the magnitude of the force is given by everybody know the Newton's second law of motion. So according to that, the force is nothing but the mass into acceleration. So this is a force F equals to mass into acceleration. This equation can be written as mass into acceleration m into acceleration can also be written in the form of displacement d square x by dt square. So consider as equation number 2. Okay, so therefore from equation 1 and 2, equation 1 and 2, here we can written as, if we compare the equation 1 and 2, therefore m into d square x by dt square is equals to minus kx. Okay, now we solve this equation. Therefore here m into d square x by dt square, ये टर्म को मैं इधर ला रहा हूँ, प्लस kx is equals to 0. Or we can written as here we divide this equation by m. अगर मैं इस इक्वेशन को m से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? देखिए यहाँ का ये m कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस k by m into x is equals to 0. Okay, now here we can put omega square is equals to k by m, and here omega is the angular velocity. Therefore the above equation become d square x by dt square plus omega square x is equals to 0. So this is the differential equation of linear simple harmonic motion. So this equation is nothing but the
differential equation of linear simple harmonic motion d square x by dt square plus omega square x is equals to 0। अब इसे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन में हमको जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो उसी सॉल्यूशन पर से हमको इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिलेगा। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट फाइंड इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन with the particle performing simple harmonic motion. So now for finding the solution of differential equation of motion exhibiting the SHM, for that we consider this differential equation number 3. So we take this differential equation once again, d square x by dt square plus omega square x equals to 0. Okay, now find out the solution of this equation. So for that we solve this equation. Okay, so now here d square x by dt square is equals to minus omega square x. Okay, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। अब इसी को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, we know that d square x by dt square is nothing but the acceleration. Therefore, acceleration of a particle which is performing the simple harmonic motion is A is equals to d square x by dt square is equals to minus omega square x। तो ये हो गया पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो कि परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, now here we solve this equation further. For that we know that dx by dt is nothing but the v, and v is the velocity of particle. Velocity of a particle. Okay, velocity of a particle. So this equation can be written as, therefore we know that acceleration a is equals to dv by dt. Okay, so we know the dx by dt is nothing but a velocity, and the rate of change of displacement with respect to time is nothing but a velocity, and the rate of change of velocity with respect to time is nothing but the acceleration. So here we can written this equation as a is equals to dv by dt, or it can be written as dv by dx into dx by dt. Okay, so therefore this equation can be written as from above here. Therefore a is equals to d square x by dt square. Okay, तो ये ऊपर की इक्वेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं dv by dx into dx by dt is equals to minus omega square x. Okay, so now from that equation here we can written as dv by dx into dx by dt is nothing but the velocity is equals to minus omega square x. Okay, अब ये मैथमेटिक्स हो गया। अब मैथमेटिक्स पे से हम देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक पार्ट है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो उस मेथड का यूज करके हम इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। देयरफॉर v into dv is equals to minus omega square x into dx। ये मैंने वेरिएबल सेपरेट कर लिया है, x का वेरिएबल यहाँ ले लिया, v के यहाँ पे था वो और एज इट इज है। अब मैं इसको क्या करूँगा, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इसको मैं दोनों तरफ से इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेट करने के बाद देखिए मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ v into dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन x into dx। तो मुझे यहाँ पे मिला है v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ओके, and here c is the proportionality constant. c is the proportionality constant, and having value we have to find out by using the boundary condition. अब बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या है कि जैसे ये पार्टिकल परफॉर्मिंग कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी स्प्रिंग लो, या फिर हम एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पे पेंडुलम का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो उस केस के अंदर में क्या होता है कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके बाउंड्री पे जो एक्सट्रीम पोजीशन रहती है,
ये इसकी बाउंड्री है, वो बाउंड्री पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे x इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं प्लस a ले रहा हूँ तो यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस a ले रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से लिखूँ माइनस a प्लस a, राइट साइड पॉजिटिव नेगेटिव, और ये होगी मीन पोजीशन, ठीक है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहता है, लेकिन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो रहती है, क्योंकि पार्टिकल वो एंड पॉइंट पे आके रुकता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकता है। मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जीरो रहती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो रहती है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम रहता है। सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस a एट एक्सट्रीम पोजीशन, बट ये वेलोसिटी इज जीरो। सो एट by using boundary condition, so we have to find out the value of c by using boundary condition. This is a boundary condition. So at extreme position, x equals to plus minus a and v is equals to 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो जीरो रहेगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो इसी का यूज करके, यहाँ पे इसी का यूज करके हमको ये जो कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर इफ यू पुट v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह में लिख रहा हूँ मैं पॉजिटिव लूंगा, तो कोई भी दो में से एक लेता हूँ मैं, तो पॉजिटिव वैल्यू लूंगा मैं, तो ये ले रहा हूँ मैं यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 प्लस c। therefore the value of c will get omega square a square by 2। इसको मैं इधर लिखेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी कंसीडर्ड इक्वेशन नंबर 4। therefore इक्वेशन 4 implies, इक्वेशन 4 में ये c की वैल्यू पुट करने के बाद मुझे मिलेगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस ये c की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। नाउ वी सॉल्व दिस फर्दर, 2 कॉमन निकल के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब मैं देयरफॉर यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा कॉमन निकालता हूँ, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद बचेगा अंदर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हियर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और v, अब मैं स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट में ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा देखिए ओमेगा प्लस माइनस, ओके। स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। So this is the velocity of the particle which is performing the simple harmonic motion। यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला था, अब ये उसकी हुई वेलोसिटी। This equation is the velocity of a particle, okay। ये इक्वेशन वेलोसिटी का, ये एक्सेलरेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हम उसका सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन निकालते वक्त हमको यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू मिल रही है जो कि पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका सबसे पहले एक्सेलरेशन मिला, उसको और हमने आगे सॉल्व किया तो हमको यहाँ पे वेलोसिटी मिला। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, a इज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके, a इज एम्पलीट्यूड, और प्लस माइनस इंडिकेट दैट द वेलोसिटी एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं तो हमको वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यू मिलती है, ओके। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप देखते हो
एक्सट्रीम पोजीशन पे x ए रहता है, हमने थोड़ी देर पहले भी डायग्राम निकाल के देखी, एक्सट्रीम पोजीशन पे a प्लस माइनस रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं a पुट करता हूँ तो a प्लस माइनस a मतलब प्लस a स्क्वायर को भी a स्क्वायर आएगा और माइनस a स्क्वायर का भी a स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर होता है 0, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी निकलती है। मीन पोजीशन पे देखिए, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी अलग लिखेंगे। ओके, सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी which is particle performing simple harmonic motion. Okay, now further we solve this equation. अब हमें इसको आगे सॉल्व करना हो, आगे सॉल्व करने के लिए मैं इसको डबल से लिख रहा हूं। now we know that velocity is nothing but the dx by dt. Velocity is the dx by dt, rate of change of displacement with respect to time. So this above equation can be written as dx by dt is equals to ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो वंस अगेन वेरिएबल सेपरेबल मेथड में इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा। देयरफॉर dx into 1 बाय अंडर रूट में इसको इधर लेके आऊंगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू dt। या तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया और फिर से मैं इसको भी इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेटिंग both sides. So therefore integration of 1 upon under root of a square minus x square into dx is equals to integration omega into dt. Okay, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, 1 upon root x का इंटीग्रेशन आता है sin इनवर्स ऑफ x, और उसके अंदर में अगर a कांस्टेंट रहता है तो उसका इंटीग्रेशन आता है sin इनवर्स ऑफ x by a is equals to इसका इंटीग्रेशन होगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ओमेगा इनटू टी प्लस फाई, हियर फाई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हियर वी कैन रिटन एज here phi is a constant of integration whose value depends on initial condition called initial phase. Okay, so here we get sin inverse of x by a is equals to omega t plus phi. Okay, so here phi is the constant of integration whose values depend on the initial condition called initial phase. We know in the simple harmonic motion. Okay, so now we solve this equation or we modify this equation further. We get now this equation once again can be written as sin inverse of x by a is equals to omega t plus phi. Okay, therefore we solve this equation, x by a is sin inverse को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा sin of omega t plus phi, और x equals to a into sin omega t plus phi. So this is the equation of displacement of a particle which is performing the simple harmonic motion, and this equation also called as, so therefore this equation also called as a solution of, therefore x equals to a sin omega t plus phi. Okay, this equation is the solution of differential equation. तो यहाँ पे देखिए a is the amplitude of this oscillation, sin is a sinusoidal function. previous lecture में हम इसके बारे में देख चुके हैं. Omega t, omega is angular velocity, t is the time, and phi is the phase difference. ठीक है.
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का, ये इक्वेशन हो गया हमारा वेलोसिटी का, और ये इक्वेशन हो गया हमारा एक्सेलरेशन का। So by using this differential equation, we have to find out the acceleration, velocity and displacement. Okay, और differential equation को लेके हमने इसका एक solution फाइंड किया x equals to a sin omega t plus phi। तो इस लेक्चर में हमने अभी तक का देखा कि कैसे सिंपल हार्मोनिक जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आया था डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, और उसे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमने उसका ही सॉल्यूशन निकाला है, और सॉल्यूशन हमारा आया है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस phi। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, particle exhibiting the simple harmonic motion. So thank you very much for watching this video.